नमस्ते बेटा। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.3 we have discussed day before yesterday. Now we will discuss the question number from 8 onwards of the same exercise. Question number 8 is find the sum to indicate a number of terms in each of the geometrical progression. The given geometrical progressions is root 7, root 21, root 3, 3 root 7, dot to n terms. These terms are of GP. So first we find out the common ratio. Dividing A2 by A1. So divide root 21 by root 7, we will get root 3. So the common ratio of this GP will be root 3. तो यहाँ पर रूट 3 निकला हुआ है और वी हैव टू कैलकुलेट सम टू n टर्म्स. सो अप्लाई द फॉर्मूला सम टू n टर्म्स. a इंटू ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाई r माइनस 1. तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड r. a इज इक्वल टू रूट 7. a मीन्स फर्स्ट टर्म. तो पुट द वैल्यू ऑफ a रूट 7, वैल्यू ऑफ r रूट 3 in this formula. तो after putting the values of a and r in this formula, you will get root 7 bracket root 3 to the power n minus 1 whole divided by root 3 minus 1. Now rationalize the denominator. To rationalize it, you will multiply by root 3 plus 1 in the numerator and denominator. And after rationalizing it, you will get its answer as root 7 by 2 into root 3 plus 1 into 3 to the power n by 2 minus 1. Next question number 9, as given in the question, first term is 1. The relation between common ratio and a is r is equal to minus 1. Sum to n terms is equal to, since r is negative less than 1, so we apply sum to n terms is equal to a into 1 minus r to the power n whole divided by 1 minus r. Now putting the values of a is equal to 1 and r is equal to minus a in this formula and solve it, you will get 1 minus a to the power n, और ये 1 minus minus becomes plus, तो 1 plus a. This is the sum to n terms of GP in question number 9. Question number 10 is easy. You will try to do yourself. Now come to 11. Evaluate sum of the first 11 terms. Means यहाँ k runs from 1 to 11. There are 11 terms and the in short form, that is written as summation of from first to 11 terms is 2 plus 3 to the power k. So putting the values of k as 1, 2, 3 successively to 11. k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक पुट करेंगे एक एक करके. When you will put k is equal to 1 in this formula, then you will get first term. Now next time put k is equal to 2, then you will get second term. Similarly up to 11 terms you have to write the terms टू इवेलुएट. तो मैंने यहाँ लिख दिया ये फर्स्ट टर्म के की जगह पर 1 डाला 2 प्लस 3 हो गया. नाउ सेकंड नेक्स्ट टाइम मीन सेकंड टाइम पुट के इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 3 स्क्वायर. थर्ड टर्म 2 प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 11th टर्म 2 प्लस 3 टू द पावर 11. समझ में आया. आपने फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इसमें k इज इक्वल टू 1 लिखे, ये आ गया. सेकंड टर्म के लिए k इज इक्वल टू 2 लिखे, सेकंड टर्म आ गया. ये थर्ड टर्म लिखने के लिए सिमिलरली यू हैव रिटन द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. नाउ इन एवरी ब्रैकेट इज 2 एंड देयर आर 11 टर्म्स. तो इन ईच टर्म 2 इज प्रेजेंट. तो 11. नाउ वी ऐड 2 plus 2 plus 2 11 times. Now and
in every bracket. In the first bracket 3, then in the second 3 square, in the third 3q, and so on, and in 11th 3 to the power 11. We may write the 3 square 3q in second bracket. These are in GP, and this is 2 plus 2 repeated 11 times. So means 2 into 11, this will be is equal to 2 into 11 means 22. Sum of means 2 plus 2 plus 2 11 times, so 22 is the bracket of the sum of the first bracket will be 22. The sum of the second bracket, in the second bracket terms are in GP, so apply the formula of GP sum to 11 terms. तो यहाँ पर आएगा बेटा ये फर्स्ट टर्म का 22 आया, सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन, फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन रेशियो डिवाइड सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट, दैट विल बी ऑल्सो a is 3 r is 3. now put in the formula sum to 11 terms, तो 3a हो गया इंटू r3 हो गया टू द पावर 11 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई r माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1. नाउ 11 into 2 22, solve it, it will be 3 by 2 and write as it is 3 to the power 11 minus 1. so this will be the sum of question number 11. अब आया क्वेश्चन नंबर 12. देखो आप, sum of the first 3 terms of a GP is 39 by 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. Whenever the 3 terms of a GP are given and their product, then in that case we consider 3 terms as, तो हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट टर्म को a by r, सेकेंड टर्म a एंड थर्ड टर्म a r. ठीक है. अब इसका एज पर क्वेश्चन द सम ऑफ दीज 3 टर्म्स इज फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म इज इक्वल टू 39 by 10 and their product a by r into a into ar is equal to 1. तो r cancels r, then a is equal to 1, therefore a is equal to 1 आएगा. now put the value of a is equal to 1 in 1. तो putting a is equal to 1 in 1 we have, ये क्या हो जाएगा 1 by r plus 1 plus 1 into r is equal to 39 by 10. take out simplify the left hand side, then you will get 1 plus r square by r is equal to 39 by 10. by cross multiplication you will get 10 r square plus 10 r plus 10 is equal to 39 r. now transpose all these terms, then you will get 10 r square और ये 10 r पॉजिटिव माइनस 39 will be negative, therefore their sum will be minus 29 r plus 10. now apply the middle term splitting to factorize it. तो अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिट लगा देंगे तो 10 r स्क्वायर, इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस 25 r माइनस 4 r प्लस 10. मेक द पेयर्स, this will be the first pair and this will be the second pair. take out 5r from the common from the first pair and minus 2 from the second pair. so then after taking common from the first and second pair you will get this, and it will be is equal to 2r minus 5 is present in both terms, so take out 2r minus 5 common, so it will be 2r minus 5 into 5r minus 2 is equal to 0. now simplify it, then you will get the values of r 5 by 2 and 2 by 5. so required ratio is 5 by 2 and or 2 by 5. when a is 1 and r is 5 by 2, a की वैल्यू आप निकाल चुके थे, तो a पता है r पता है, इन टर्म्स में लिख दो कि एक a और r की वैल्यू a 1 लिखोगे, r लिखोगे 5 by 2, then you will get terms of 3 terms of GP 2 by 5, 1 and 5 by 2. ठीक है. when you will write a is equal to 1 and r is equal to 2 by 5, then you will get these terms. okay. so now next question number 13. how many terms of GP 3 square 3q dot 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 are needed to give sum 120. भाई इस
ये दीज टर्म्स आर इन जीपी, क्योंकि एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 3, है ना, इन इट्स प्रेसिडिंग नंबर। तो जब ये जीपी में है तो इन कितने टर्म्स को ऐड करेंगे सम 120 हो जाए। तो भाई फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशियो मीन्स डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, यू विल गेट कॉमन रेशियो आर 3। नाउ SN is given 20. We are not knowing how many terms are added to get sum as 120. So that is SN. And N we have to find out number of terms. So sum to n terms of GP R is greater than 1. That's why sum to n terms of GP will be A into R to the power n minus 1 whole divided by R minus 1. Now put the values of SN, A, R and solve it. Then you will get n is equal to 4. The number of required terms to be added to give sum 120 is 4. तो हम इसके फर्स्ट 4 टर्म्स को ऐड कर देंगे तो हमको सम कितना मिलेगा 120. Question number 14. The sum of the first 3 terms of a GP is 16 and the sum of the next 3 terms is 128. Determine the first term, common ratio and the sum to n terms of GP. So as given S3, sum of the first 3 terms 16. Sum of the first 6 terms will be sum of the first 3 terms plus sum of the next 3 terms. पहले 3 टर्म को जो 3 टर्म्स प्लस नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड कर देंगे सम ऑफ 6 टर्म्स आ जाएगा. दैट विल बी 16 प्लस 128 इज इक्वल टू 144. ये कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा. बेटा नाउ find the ratio of S3 by S6. You know S3 as you know S6. That's why S3 by S6 will be A R to the power A into R Q minus 1 divided by R minus 1 whole divided by A into R to the power 6 minus 1 whole divided by R minus 1. R minus 1 cancels R minus 1. A cancels A. Now put the values of S3 and S6. 16 by 144. तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइडेड यहाँ व्हाट इज लेफ्ट हियर आर क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 6 माइनस 1. नाउ फैक्टराइज आर टू द पावर 6 माइनस 1 कैन बी रिटन एज आर टू द आर क्यू प्लस 1 इंटू आर क्यू माइनस 1. सो आर क्यू माइनस 1 कैंसिल्स आर क्यू माइनस 1. कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट. नाउ 16 and 144 both are divisible by 16. So 16 1 is 16, 16 9 is 144. So it will be 1 by 9 in simplest form. Here will be 1 by r cube plus 1. By cross multiplication you will get r is equal to 2. r की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी. Putting r in 1 we have 16 by 1 S3 is equal to a into r 2 power 3 minus 1 by 2 minus 1. तो simplify it and you will get a is equal to 16 by 7. So now you have got r is equal to 2 common ratio. First terms of the GP 16 by 7. Now come to sum of n terms of GP. So sum to n terms of GP is equal to a into r to the power n minus 1 whole divided by r minus 1. But put the value of r is equal to 2 and a is equal to 16 by 7 in this formula. इस फॉर्मूला में पुट करो और सॉल्व करो तो आपको क्या एस एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 16 by 7 इंटू आर टू द पावर 2 आर मीन्स 2 लिख दिए 2 to the power n minus 1 और r की यहाँ भी 2 लिख दिए 2 minus 1 1. तो क्या बचा व्हाट इज लेफ्ट हियर. तो 16 by 7 into 2 to the power n minus 1. This is the nth terms of the given GP. तो नाउ नेक्स्ट आया बेटा 15 क्या हुआ सम गिवन ए जीपी विथ फर्स्ट टर्म मीन्स जीपी का फर्स्ट टर्म 729 है उसका 7th टर्म मीन्स दैट इज 64 और डिटरमाइन सम. देखो आपकी बुक में दिया गया S7 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स. मैं उसको 6 निकाल रहा हूँ 7 अपने से निकाल रहा हूँ. थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी चाहिए ना भाई. तो here a is given 729 7th term means
ए आर टू द पावर एन माइनस वन होता है, तो ए सेवंथ क्या होगा, ए आर टू द पावर 6 दैट इज 64, वेयर आर इज कॉमन रेशियो। ये जो आर कॉमन रेशियो है, ए फर्स्ट टर्म। अब हमने क्या किया, ये जो हुआ इसमें, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन दिस टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर। तो इसमें मैंने ए की वैल्यू 729 पुट की और सॉल्व किया, देन यू विल गेट आर इज इक्वल टू 2/3 और आर इज इक्वल टू 2/3। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला सम टू 6 टर्म्स ऑफ जीपी, then you will get sum of the first 6 terms इसमें पुट करो, S6 इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करो 1 माइनस, बिकॉज देखो देयर आर 2 formulas of sum to n terms. If r is greater than 1 then apply a into r to the power n minus 1 by r minus 1. If r is less than 1 then apply a into big bracket 1 minus r to the power n minus 1 by r. Here r is less than 1, that's why a into 1 minus r to the power n, this is r to the power n by 1 minus r. इसको solve करो, then you will get sum to 6 terms of GP 1995. Now that the remaining questions we will solve on the next day. Thank you.